Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, perfect. Are you all done with the exercise that I sent yesterday? Are you done with the exercise I sent yesterday? Yes, ma'am. We are done. Perfect. So, what we can do is we can very quickly check the answers to it. What you can do it, what you can do is all of you can send your answers in the chat box very fast. You can type your answers and send it on the chat box very fast, and then I'll show you the answers. Just in 2 minutes, let's do that. Oh, someone has already sent it. Okay. Let's just check if everyone is on the right page. Did you face any problems? Was any question confusing? Anything was confusing? Just in 2 minutes, we'll just have a look. कुछ भी problem आई? Okay, I'll share the answers. Just check your answers for once. See, check your answers with this. It's visible now properly. Check your answers. Only about, did you face any problems with any of the questions? I hope not. I'll just discuss with you the point number two, where it's written, he is reading the book Wings of Fire. Now I'll tell you, this can be simple present also and it can be present continuous also. मैं आपको बताती हूँ कैसे. एक बुक किसी इंसान को पढ़ने में सबको अलग अलग टाइम लगता है. Some people read it in one go, बैठ के एक पूरे दिन में पढ़ लिया. Some people take 10 days. Some people read like 5 pages a day, 6 pages a day, right? So what can be understood from this is, या तो अभी के अभी he is reading a book, अभी ही वो इंसान लेके एक वो बुक बैठा है and you are telling he is reading the book Wings of Fire. ठीक है कि उसके हाथ में जो बुक है जो वो पढ़ रहा है वो विंग्स ऑफ फायर है, ही स्टडिंग दैट बुक. इधर इसका ये मतलब निकल सकता है या फिर इन सिंपल प्रेजेंट भी निकल सकता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज दिस दैट आई एम रीडिंग इट राइट नाउ, लाइक आई एम टीचिंग, आई एम टॉकिंग राइट नाउ. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बट इफ ही इज रीडिंग द बुक, इन दिनों वो ये बुक पढ़ रहा है, बोलते हैं ना, somebody recently, I mean somebody recently told that he is reading the book Wings of Fire, right? मतलब वो इन दिनों पढ़ रहा है, शायद वो अभी भी पढ़ रहे होंगे. ठीक है, मे बी इट्स नॉट डन, he hasn't finished the book yet. So even that can be taken here. ठीक है, it can be simple present or it can be present continuous. ठीक है, so there are always exceptions. Although there is ing in this book, but reading a book may not always mean present continuous. अभी के अभी हो रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, क्लियर. आई थिंक बस एक इसमें आपको कंफ्यूजन हो भी सकता है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन कंटिन्यूअस ओनली. ओके, so we'll start with today's class. No confusions. Let's just come to today. Okay, so good morning everyone and let's start today's class.
We can't change the past, but we can learn about it. Correct? So today we are going to study about past tense. Actually, the quote says, uh, quote says we can't change about the past, but we can learn from it. But today we are going to learn about it. Okay? So अगेन मैंने कल आपको बताया था जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा प्रेजेंट टेंस हर फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री बेस कैटेगरीज दैट इज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस and each tense is divided into four more subcategories which is divided into simple continuous perfect and perfect continuous clear simple clear tha to past is going to be very easy for us. Okay, coming to simple past. कोई भी चीज in your general life, if you have started thinking in English, like I told you, think in English. हर चीज मैं जो जो एक्टिविटीज कर रही हूँ सब कुछ बोलो in your in English. जो भी है I woke up, I did that. तो कल तक हम प्रेजेंट में बोल रहे थे. You know, I wake up every day, I brush my teeth, I do this, I do that. अब हम सिंपल पास्ट में बोलेंगे. ठीक है इन सिंपल पास्ट व्हाट विल डू इज जस्ट द वर्ब जो भी प्लेन वर्ब था उसका नॉर्मल पास्ट जो भी आपके मुंह पे आएगा वो आपका जनरल पास्ट ही होने वाला है यू डोंट नीड टू पे सो मच हीट टू इट कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं वो आपका वर्ब का जो प्लेनेस्ट पास्ट फॉर्म है वो राइट ही निकलेगा जैसे आई वोक अप आई वेक अप का आई वोक अप आई ब्रश्ड माई टीथ इन रेगुलर वर्ब्स ईडी ही जुड़ता है उसमें और कुछ भी नहीं वर्ब सेकेंड फॉर्म इज वर्ब प्लस ईडी in some verbs, it changes, like we saw eat, ate, eaten, take, took, taken. ठीक है किसी किसी में होता है then I took breakfast or I ate breakfast. ठीक है so it changes. So actions that happened and finished in the past. Simple past. ठीक है कोई चीज जो हुई और होके खत्म हो गई. Simple. Okay that would come in simple past. For example, we went to Pune last month. हम पुणे गए थे बस. आई फिनिश्ड प्रेजेंट टेंस yesterday. कल हमने प्रेजेंट टेंस फिनिश किया खत्म कर दिया था कल ठीक है इट्स नॉट ऑन गोइंग हो चुका इसलिए पास्ट शी डिड द एक्सरसाइज गिवन इन द क्लास जो एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था वो आपने कर लिया सो यू डिड द एक्सरसाइज डिड ठीक है डू डिड डन तीन होते हैं ही फॉरगॉट अबाउट द क्लास yesterday वो कल क्लास के बारे में भूल गया था सिंपल पास्ट ओके परफेक्ट नो प्रॉब्लम्स विद सिंपल पास्ट let's come to past continuous tense ठीक है now past continuous tense is going to talk about actions that were ongoing at a specific point of time चल रहा था लेकिन हम बता रहे हैं किस टाइम पे चल रहा था for example I was teaching when the cat entered the door ठीक है एक बिल्ली घर के अंदर घुसी पर कब घुसी जब मैं पढ़ा रही थी तो इट इज टॉकिंग अबाउट टू एक्टिविटीज एक मैं पढ़ा रही थी और दूसरा उसी किस वक्त पढ़ा रही थी जिस वक्त वो बिल्ली घुसी या वो बिल्ली कब घुसी जिस वक्त मैं पढ़ा रही थी देर आर टू एक्टिविटीज हियर और इस हमेशा ऐसा होता है ना आई वॉज टीचिंग या फिर माई मदर वॉज टीचिंग व्हेन शी वॉज यंग ठीक है कोई भी चीज जो पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही थी आई विल शो यू द एग्जांपल्स यू सी द स्ट्रक्चर वंस सब्जेक्ट कोई भी पर्सन जो एक्टिविटी कर रहा था was और were डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर है या प्लूरल है was for singular people I was बस there are exceptions to it for you we use were ठीक है I will come to that don't worry but for now understand the structure ठीक है सब्जेक्ट के साथ was या were जुड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कौन है क्या है कितने लोग हैं ठीक है जैसे she was studying and they were studying ठीक है she was studying yesterday she was studying day before yesterday she was studying whenever she was studying verb का first form plain form any activity study के साथ ing जुड़ जाएगा the verb's first form plus ing perfect examples I was drinking coffee मैं कॉफी पी रही थी easy ठीक है आई वॉज टेकिंग अ क्लास व्हेन गौरव कॉल्ड ठीक है जब मुझे गौरव का कॉल आया आई वॉज टेकिंग अ क्लास तो मैंने नहीं उठाया ठीक है आई वॉज टेकिंग अ क्लास they were gossiping about the teacher when she entered must have happened with a lot of you they were gossiping about the teacher when she entered ठीक है जब टीचर ने एंटर किया बच्चे उनके ही बारे में बात कर रहे थे सपोज ठीक है when the class started she was sleeping जब क्लास स्टार्ट हुई वो सो रही थी अगर आप देखोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस हम एक स्पेसिफिक टाइम हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई वाज ड्रिंकिंग कॉफी नो नीड ऑफ एनी अदर सिचुएशन विद दिस
बट यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर यूजिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसा होता है कि हम एक और एक्टिविटी के साथ उसको रिलेट करते हैं, जब ऐसा हुआ तब ऐसा हो रहा था। ठीक है, लेट मी मूव अहेड, दिस इज क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस वाज वेरी इजी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में यू नीड टू पे सम अटेंशन। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जनरली दो एक्टिविटीज जब साथ में हो रहे होते हैं, आई टेल यू हाउ, एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जैसे मुझे ऐसा आपको बताना है कि कोई चीज, जैसे आई हैड आई हैड स्टार्टेड द क्लास व्हेन ही जॉइंड। कोई है जिसने 5 मिनट बाद ज्वाइन किया, तो आई बी लाइक आई हैड स्टार्टेड द क्लास व्हेन ही ज्वाइंड। उसने भी पास्ट में ही ज्वाइन किया। मैं ये स्टेटमेंट जिस प्रेजेंट में बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पास्ट इन विच देर इज वन मोर पास्ट। आर यू गेटिंग इट? एक पास्ट इंसिडेंट था जो हो चुका है, यानी कि उसका ज्वाइन करना। वो उसने ज्वाइन कब किया? मेरे क्लास स्टार्ट करने के बाद। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया तब ही हैडंट ज्वाइंड। ठीक है, देर आर टू एक्शंस हैपनिंग बैक टू बैक। आई हैड स्टार्टेड द क्लास एंड ही हैड ज्वाइन। ठीक है, बट उसके ज्वाइन करने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। तो मेरे सेंटेंस में जो दोनों एक्शंस आ रहे हैं, बोथ ऑफ देम हैड हैपेंड इन द पास्ट। तो अब हमें इस तरह से लिखना है कि पता चले कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस, यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब दो एक्शंस का जिक्र हो रहा होगा, यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, actions that happened before another action in the past, or when there are two actions happening back to back. Understood? Subject had, I'll show you the examples, you'll understand. Subject had plus verbs third form, past participle बोलते हैं, जो हमने कल किया था V1 V2 V3। ठीक है, we'll cover that again in detail if there are any problems. ठीक है, मैंने बताया था I was drinking coffee. आई हैड द कॉफी बिफोर इट गॉट कोल्ड। पी तो रही थी, लेकिन कब खत्म कर लिया कॉफी पीना? उसके ठंडे होने से पहले। देयर आर टू एक्टिविटीज, गेटिंग कोल्ड एंड हैडिंग ड्रिंकिंग द कॉफी। आई हैड द कॉफी बिफोर इट गॉट कोल्ड। अंडरस्टूड? गॉट कोल्ड भी पास्ट में ही हुआ ना। अभी अभी के अभी कॉफी ठंडी नहीं हो रही है, कॉफी है ही नहीं अभी तो। आई टोल्ड यू इट गॉट कोल्ड, उससे पहले आई ड्रैंक इट। टू एक्टिविटीज। आई हैड एंडेड द क्लास व्हेन संध्या कॉल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ? आई एम गेटिंग अ कॉल। आई डिड नॉट रिसीव द कॉल व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, बट व्हेन द क्लास एंडेड somebody कॉल्ड। तो आई हैड एंडेड द क्लास व्हेन संध्या कॉल्ड। पहले क्या हुआ? क्लास खत्म हुआ, फिर संध्या का कॉल आया, सो आई टुक इट, आई रिसीव्ड द कॉल। ठीक है, I had ended the class when Sandhya called. Sandhya called is one activity and I had ended the class is another activity. But before Sandhya called, I had ended the class. दोनों एक्टिविटीज दोनों एक्टिविटीज एक के बाद एक हुई थी। ठीक है, शी हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर 6 years बिफोर शी स्टार्टेड टीचिंग। दो एक्टिविटीज है, उसने टीचिंग का करियर शुरू किया और उसने इंग्लिश पढ़ा। शी स्टडीड इंग्लिश 6 years फॉर 6 years बिफोर शी स्टार्टेड टीचिंग। ठीक है, व्हेन आई वोक अप द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, ओके, क्लियर? Past perfect is clear, two activities. So now we come to past perfect continuous. Actions that were ongoing in the past and were completed before another past action. ठीक है, जो हमें आपको ऐसा बताना है कि मैं ये काम करती रह रही थी till certain point of time, or we'll see the examples. ठीक है, actions they were ongoing in the past and they were completed up to till some point it went on and then it was completed. Structure है subject plus had plus been. Yesterday somebody asked about been, कि been कब use होता है? जब एक्टिविटी हो रही होती है। अगेन देर इज कंटिन्यूअस हियर, been is used when there is continuity. ठीक है, I had been teaching English for 5 years. ठीक है, whatever. एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years बिफोर आई बिकेम अ लॉयर। दो एक्टिविटीज, आई बिकेम अ लॉयर एंड मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, लेकिन कब? कब से पहले भी पढ़ा रही थी, बिफोर आई बिकेम अ लॉयर। सो व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट टू एक्शंस जिसमें कंटिन्यूटी है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अगर एंड हो गया है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आई हैड टॉट इंग्लिश बिफोर आई बिकेम अ लॉयर, इसका मतलब खत्म हो गया, अब नहीं पढ़ाती हूँ। आई हैड टॉट, यानी कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ओके, इट्स नॉट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दैट्स व्हाई द एक्टिविटी इज स्टिल ऑनगोइंग। ठीक है, शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर मंथ्स बिफोर द एग्जाम। वो एग्जाम से पहले तक पहले से पढ़ रही थी टिल एग्जाम्स। ठीक है, सो एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट
till her exams. She was studying, पढ़ी रही थी before the exam. They had been waiting for the answers till the next class started. आप कल से लेके आज तक आंसर्स का वेट कर ही रहे थे सिंस yesterday. ठीक है, I got a lot of people sending their answers. यानी कि आप कल से वेट कर रहे थे आंसर्स का. कब तक? जब तक आपको आज आंसर्स नहीं मिले. अब आपका वेट खत्म हो गया है. ठीक है, सो यहाँ पे दिस एक्टिविटी हैज एंडेड. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू मस्ट हैव सीन दैट हमने ऐसा किया था जो एक्टिविटी अभी भी चल रही है, दैट वी हैव बीन वेटिंग इन द मीटिंग टू ज्वाइन सपोज. ठीक है, तो वो अभी भी हो रहा है, बट इधर है हैड बीन वेटिंग. ठीक है, हैड बीन वेटिंग. फॉर हैड यू शुड हैव नो कंफ्यूजन. हैड मतलब हो गया, हैड मतलब पास्ट. ठीक है, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours when the electricity went. लाइट चली गई थी पर वो 2 घंटे से पढ़ रही थी. लाइट जाने के पहले के 2 घंटे से शी वाज स्टडिंग. परफेक्ट, परफेक्ट. वी हैव गॉन थ्रू पास्ट वेरी इजीली. आई अगेन कल की तरह मैं आपको एक क्विक रिविजन के लिए पास्ट के लिए आई सेंड यू. Now let's do some practice. You will type in the chat box very fast. Is this sentence correct? This is very fast practice we are going to do. You will type in the chat box and I'll check. Hurry up. He died before the ambulance reached. Just tell me, is it correct or not? What do you think? See, about tenses, हाँ पढ़ना जरूरी है अभी के लिए, because keeping in mind that people here, everybody has a different level of understanding, or I will assume people from all groups like basics, intermediate to people who have knowledge of advanced English. I will take it in that way. ठीक है, मुझे यही assumption लेके पढ़ाना होगा because a lot of you are here. ठीक है, so I will take tenses for 2 to 3 days so that everybody has a clear basic done. Okay. Chalo. Is this sentence correct? No, it's not. Okay. It's not correct. And what is the correct sentence? I have given you the hint. It's not correct. Jaldi se just tell me if you can make the right sentence or not. I'll understand whether you've got the essence of today's class or not. I'll give you a hint. 2 activities are happening. एक के बाद एक in the past. Just wait for a minute. Okay. So I'll tell you what happened is, did you understand the meaning? Meaning क्या था? He died before the ambulance arrived. ठीक है? इसमें क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, a person died, उसके बाद ambulance आई. यानी कि, yeah, right. He had died before the ambulance arrived. दो events हुए. Ambulance तो आई. Nobody said that the ambulance did not come. The ambulance came. But before the ambulance could come, the person had already died. Had died. कोई भी चीज, अब आप भी अपने आंसर्स में लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, एंड यू हैव टू थिंक कि मुझे ऐसा लिखना है कि पास्ट में ही हुई थी ये दोनों चीजें. ठीक है, सपोज व्हेन यू आर कमिंग टू डायरेक्टर्स लायबिलिटी, ऐसा कुछ आया है कि सो एंड सो देयर वाज अ चेक बाउंस दैट हैपेंड, वाज द डायरेक्टर लायबल. ठीक है, द डायरेक्टर हैड रिजाइन्ड बिफोर सच लायबिलिटी अरोज. लायबिलिटी में अराइज पास्ट में हुई थी. डायरेक्टर ऑल्सो पास्ट अवे इन द पास्ट. सॉरी, डायरेक्टर हैड रिजाइन्ड इन द पास्ट. ठीक है, सो द डायरेक्टर हैड रिजाइन्ड बिफोर द लायबिलिटी अरोज. ठीक है, इन दीज काइंड ऑफ केसेस यू मस्ट समटाइम्स गेट कंफ्यूज एंड मे बी आपका मीनिंग ही चेंज हो जाए. ठीक है, डायरेक्टर रिजाइंड. ठीक है, सो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, आई वांट दीज थिंग्स टू कम टू यू नेचुरली, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी, आपके दिमाग में इसका एक फ्रेश रिवीजन हो गया होगा. ठीक है, यू अंडरस्टूड? यू अंडरस्टूड? दिस इज क्लियर? Was there any problem with Yes, past ma'am. perfect? Because a lot of you couldn't really write answers. Now is it clear? ठीक है, so he had died before the ambulance arrived. Something when two activities of the past, क्योंकि आप कुछ भी लिख रहे हो ना, आपको past की ही चीजें पूछी जाएंगी. ठीक है ना? Assume yourself as a company secretary of so and so year and this, तो ये हुआ, तो what would you advise? हर चीज तो past की ही advice दी जाएगी ना. ऐसा हुआ था,
तो ऐसा हुआ था पर उससे पहले ये हो गया था, ठीक है। इन दीज केसेस आपको पास्ट परफेक्ट काम आएगा, ठीक है। सो हैव अ क्विक रिविजन ऑल्सो टुडे आफ्टर द क्लास, ठीक है। आंसर जल्दी से इन द चैट बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सी, सॉ एंड सील। यही तीन वर्ड से ये ब्लैंक्स फिल होंगे, सी से, सॉ से और सील से। तीनों वर्ब के फॉर्म्स है, पर किस सेंटेंस में कौन सा आएगा वो आपको लगाना है। Just write 1, 2, 3 and write the answers. I'm giving you 1 minute. Okay. So most of you have got the first one right, which is seen. Second and third में I can see a lot of seesaw. Seesaw दिख रहा है बहुत सारा. Just think carefully. लगा के देखिए एक बार. Okay. ठीक है? Let's discuss. देखिए, सॉ एंड सीन दोनों चीज देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों पास्ट की चीज है। कौन से पास्ट का कौन सा है वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सी इज वेरी क्लियरली इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंट। सी, सी मतलब देखना। दिस इज द वर्ब्स प्योरेस्ट फॉर्म। और अगर आपको याद होगा, हमने प्रेजेंट टेंस में एकदम फर्स्ट में ही पढ़ लिया था, सिंपल प्रेजेंट में कोई भी चीज, रूटीनल एक्टिविटी या रेगुलर एक्टिविटी या जनरल फैक्ट जो होता है, उसमें हम प्लेन वर्ब यूज करते हैं। सी इज द प्लेन वर्ब, ठीक है। सो प्लेन वर्ब का यूसेज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट बिकम्स सीइंग, ठीक है। आई हैव, शी इज सीइंग द डॉग या वट एवर, ठीक है। उसमें सीइंग हो गया। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में इट बिकम्स हैव सीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इट बिकम्स हैव बीन सीन, ठीक है। इसीलिए सी इज द वर्ब, जो भी वर्ब का प्लेन फॉर्म होता है, अगर सिर्फ उतना लिखा हुआ है तो यू मस्ट सिंपली अंडरस्टैंड कि वो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई सी हर एवरी डे, क्योंकि द वर्ड एवरी डे इज देयर, सो आई सी हर एवरी डे इन द मीटिंग। आई सॉ हर एवरी डे इन द मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि मैं उसको मीटिंग में रोज देखता था, दैट वुड बिकम आई यूज टू सी हर एवरी डे इन द मीटिंग, ठीक है। आई सॉ हर एवरी डे इज नॉट अ राइट सेंटेंस। आई सॉ हर एवरी डे, एवरी डे cannot be in the past. I saw her every day नहीं होगा, ठीक है। तो yesterday was the first time when I saw her, क्योंकि yesterday is past and you had seen her yesterday. So I saw her. Yesterday was the first time when I saw her. So most of you got it right. I had never seen her before the class. I see her every day in the meeting. Yesterday was the first time when I saw her. Clear? No confusion? I'm mixing a little present with the past so that आपको easily आप relate कर पाओ कि कल की चीजें ऐसे wash away नहीं हो जाए, ठीक है। You must remember the present also. Got it? Perfect. We'll move ahead. Check your answers. Perfect. मैंने बता दिया था आपको. Now, answer this. 3 new criminal laws have been, has been, या had been implemented in India with effect from 1st July 2024. I'll wait for your answers. Think and answer, no worries. Has been या have been? Most of you are typing either has been or have been. Had been नहीं होगा, आपने cancel कर दिया है had been को. Why have you cancelled had been?
Okay, let's discuss. Okay, so there is one thing here जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, that is has and have. ठीक है, मैंने आपको जैसे do and does group पढ़ाया था, I have to teach you has and have also. So it would not be has been at all. Has been बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि has is used with singular nouns. It is my fault. Don't worry. I'll cover that. I'll cover that. मैं has और have cover करने वाली हूँ. So here the answer would be three new criminal laws have been implemented in India. ठीक है? क्यों होगा have been? क्योंकि तीन क्रिमिनल लॉज है. हम तीन की बात करें. अगर मैं ऐसा बोलती ना अ न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है तो अ न्यू क्रिमिनल लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बोलती है. अगर एक होता तो एक है तो हैज, अनेक है तो हैव. We will cover has and have tomorrow. The first thing I'll start in the class will be has and have tomorrow. ठीक है, so that this is clear. I had completely forgotten कि ये मैंने ही नहीं पढ़ाया है आपको. दूसरा had been बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, had been इसीलिए नहीं होगा क्योंकि लागू होके it is ongoing now. Anyway, you all had already reduced that from the answer. So हाँ, had been तो होगा ही नहीं. हैज एंड हैव में जो कंफ्यूजन था वो कल क्लियर हो जाएगा. बट अभी भी मैंने आपको एक चीज के लिए ऐसे बता दिया. जैसे हमने डू एंड डज किया था ना, जैसे मैं बोल रही हूँ शी हैज बीन स्टडी. ठीक है, शी डज भी था. आपको याद होगा डू एंड डज. शी वॉज इन डज. ही, शी, इट एंड somebody का नेम. ठीक है, राम. दैट इज इन डज. वैसे ही हैज में ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज. ठीक है, बट वेन देर आर टू पीपल, Ram and Sham have been talking. Ram and Sham have had breakfast. ठीक है, उधर लग जाएगा have क्योंकि दो लोग हैं. या फिर I have, you have, we have, they have. ठीक है, right. ठीक है, he, she, it has been. I, you, we, they is have been. Correct. Very good, Sandhya. So, but I'll just make a chart and then show you. I'll add it in this one only. ठीक है, जैसे हमने do and does किया था वैसे ही I'll add have, has and have also once. Okay. So today's class is clear. Anything that you have to ask, anything with which you have confusion, anything you want to address, you can turn on your cameras and just let's just have an open discussion. If there's anything, let me know. You understood? आपको समझ आया आज की क्लास? आपको शायद अगर आपके कुछ confusions रहे होंगे from a long period of time, is it clear? पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन है. संध्या, एक बार आप मुझे अच्छे से बताओगे आपको क्या कंफ्यूजन है. आई क्लियर इट फॉर यू, डोंट वरी. पास्ट कंटिन्यूअस बोला और पास्ट परफेक्ट बोला. सी पास्ट continuous is something that was happening at a certain point of time. जैसे कोई एक्टिविटी हो ही रही है, कंटिन्यूटी है, ongoing नेचर है इन पास्ट कंटिन्यूअस. एंड इन पास्ट परफेक्ट द एक्टिविटी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. पास्ट कंटिन्यूअस जैसे मैंने बोला, ओके नाउ जस्ट लेट अस टेक इट इन दिस वे. माय पेरेंट्स आर कॉलिंग मी राइट नाउ. ठीक है, माय पेरेंट्स आर कॉलिंग मी. अभी मैं क्लास ले रही थी व्हेन माय मॉम वाज कॉलिंग मी. तो क्या हुआ, आई वॉज टेकिंग अ क्लास व्हेन माय मॉम वाज कॉलिंग मी. ठीक है, अब मुझे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बोलना है. तो आई वॉज टीचिंग व्हेन माय मॉम कॉल्ड. आई डिड नॉट टेक हर कॉल. नाउ एज सून एज क्लास खत्म हुआ ना, उतने में पापा का फोन आया और मैंने उठा लिया. ठीक है, नाउ माय मॉम कंप्लेन्स तुमने पापा का फोन तो उठा लिया, मेरा फोन तो नहीं उठाया. व्हाट विल आई टेल हर? आई विल टेल हर आई वॉज टीचिंग व्हेन यू कॉल्ड. पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज टीचिंग व्हेन यू कॉल्ड. ठीक है, और आपने पास्ट परफेक्ट पूछा, सॉरी. हाँ ठीक है, पास्ट परफेक्ट. एंड आई हैड एंडेड द क्लास व्हेन पापा कॉल्ड. आई वाज टीचिंग व्हेन यू कॉल्ड मम्मी एंड आई हैड एंडेड द क्लास व्हेन पापा कॉल्ड. डिफरेंस समझ में आया? कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का. संध्या, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो कुछ जो हो रहा था जब आपने सो एंड सो काम किया, ठीक है, और वो होके खत्म हो गया था जब ये दूसरी एक्टिविटी हुई. बट बोथ ऑफ द थिंग्स हैव अ रिलेशन इन द पास्ट. ठीक है, perfect, good to go. No confusions. If there's any other confusion, let me know. फिर से सब स्लाइड बताओ ना, so that you can take
You want a screenshot? Okay. I'll just make you go through the slides, or else I'll send you. ये तो प्रैक्टिस के थे. I'll let me do one thing. मैं आपको एक बार जल्दी से सिंपल पास्ट ये है, एक बार आप देख लो. इसमें स्ट्रक्चर भी है. यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक. इस पे ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, बट आई सेंड यू द वर्ड ऑल्सो. उस पे भी मैंने अच्छे से हाईलाइट करके रखा है. यूसेज भी है उसमें, स्ट्रक्चर भी है उसमें. टुक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस सिंपल पास्ट. इफ यू वांट एग्जांपल्स यू टेक इट, अदरवाइज आई मूव अहेड. आप सबका यूसेज और स्ट्रक्चर ले लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है. पास्ट कंटिन्यूअस, actions that were ongoing at a specific time in the past. And Sandhya, you can just have a look again. ठीक है. I was taking a class when you called. So past continuous. ठीक है. You can check examples for once. Past perfect, दो एक्टिविटी हुई है बैक टू बैक. पास्ट कंटिन्यूअस में था, एक एक्टिविटी चल रही थी और फिर एक एक्टिविटी हुई. इसमें एक के बारे, ये भी खत्म वो भी खत्म. बोथ द एक्टिविटीज हैव फिनिश्ड हैपनिंग बट दे टुक प्लेस बैक टू बैक. सो दिस इज पास्ट परफेक्ट. आई हैड द कॉफी बिफोर इट गॉट कोल्ड. दोनों ही काम होके खत्म हो चुके हैं. कॉफी ठंडी भी हो गई है और कॉफी को पी भी लिया गया है, बट ठंडी होने से पहले पी ली थी. ठीक है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी. ठीक है. एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट एंड वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Perfect. No confusions. No worries. No, ma'am. Okay. Perfect. ठीक है. चलो then. We'll meet tomorrow again at the same time, and tomorrow we'll complete tenses और फिर we'll do some exercises so that your tenses is clear and it causes no problems when you're writing the answer. आपका मीनिंग चेंज ही नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा आप क्या बोलना चाहते हो. ठीक है. डोंट फोकस ऑन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर और यूसेज पे ना. प्लीज डोंट फोकस. डोंट गोइंग टू sorry, you're not going to spend your time in the exam thinking about the tense. इंटेंट पे जाओ. ठीक है. इंटेंशन क्या है, मुझे क्या बोलना है. ये पहले हो गया था कि ये पहले, क्योंकि इन दीज थिंग्स वी ऑफन मेस अप. ठीक है. हम ना हमेशा बोलना कुछ और चाहते हैं बट हमारा मीनिंग कुछ और निकल जाता है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रन थ्रू टेंसेस वेरी इजी, वेरी प्रॉपरली, सो दैट आपका और फोकस ऑन द इंटेंशन. ठीक है. ज्यादा यूसेज और स्ट्रक्चर में आप अपना दिमाग मत खराब करना. ठीक है. बिकॉज इट वुड कम नेचुरली. बस थोड़ा सा प्रैक्टिस. थिंक इन इंग्लिश, जैसा मैंने आपको बोला है. Think in English. Stop the habit of translation. It takes a lot of time. It is going to make your life very difficult. ठीक है. तो आप एकदम सिंपल चीज रखो लाइफ में कि आप अभी से, जैसा कल आपने किया, मैंने आपको बोला था इफ यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश, आई वेक अप एट दिस टाइम, आई डू दिस, आई डू दैट. ये था प्रेजेंट में. अब आप पास्ट में करो अभी के लिए. ठीक है. आई वोक अप एट 7 in the morning, आई वेंट टू द जिम, आई केम एंड आई हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी एंड आई टुक बाथ. ये सब सिंपल पास्ट में हो रहा है. ठीक है. आई स्टार्टेड द क्लास, आई टुक द क्लास, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास. ठीक है. अभी क्लास खत्म होने वाली, दिस हैड कम इनटू द फ्यूचर, फॉरगेट. सो आई टुक द क्लास. ठीक है. आई एंडेड द लेक्चर, देन आई एम डूइंग दिस, आई विल डू दिस, व्हाटएवर. ठीक है. आप फ्यूचर में भी आ सकते हो, बट फॉर नाउ यू कैन प्रेजेंट इन द, यू कैन फोकस इन द सिंपल पास्ट कि ऐसा 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 हुआ. ठीक है. एंड ट्राई इनकलकेटिंग दीज थिंग्स इन योर रियल लाइफ. कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी सिंस दिस टाइम, आई हैड बीन डूइंग दिस. ठीक है. आई हैड डन दिस, व्हाटएवर. Perfect. Start thinking in English. Your life would become very easy. Trust me. ठीक है. चलो then I'll end the class. Thank you so much. See you all tomorrow. Okay.